Hello students, मैं हूँ आपकी लर्निंग गाइड और आप देख रहे हैं साइंस ज्ञान. In today's video, we'll cover these topics. But before start, if you're new to my channel, you can do check out my old videos in the above given link in I button. Link is also given in description box, so you can do check out over there. And now, without further delay, let's get started. So as you know that in the last class we have discussed the three sources of electricity and the fourth source is generator. So generator working principle is quite similar to the dynamo. The principle of working generator is known as So the fourth type of source of electricity is generator, and this generator works on the principle electromagnetic induction. This is the working principle of generator, which is given by Michael Faraday. सो माइकल फराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रिंसिपल दी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो उसमें ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा. सो दिस प्रिंसिपल इज क्वाइट सिमिलर टू द प्रिंसिपल विच वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास फॉर डायनामो, जिसमें हमने ये देखा था कि किसी कंडक्टर के दोनों साइड तो हमने ये देखा था इन द लास्ट क्लास कि जो कंडक्टर होता है नॉर्थ साउथ पोल के मिडल में क्या होता है, रोटेट करता है. एंड बिकॉज ऑफ देयर मैग्नेटिक फील्ड, एज दिस कंडक्टर इज मेड अप ऑफ कंडक्टिंग वायर, मेड अप ऑफ the substance which can conduct charges, so they start generating some charges in them and start producing electricity. So this is how it works. इस वाले कंडक्टर को रोटेट करने के लिए about these magnets, what do we need? We use any kind of like kerosene oil or diesel or water to rotate this. For the rotation of this conductor, हम लोग कुछ मीडियम यूज करते हैं लाइक केरोसिन ऑयल, डीजल, वाटर, जिसकी वजह से ये जो हमारा कंडक्टर होता है ये रोटेट करता है इन जनरेटर, जिसमें कॉइलिंग की होती है बाय द कंडक्टिंग वायर. एंड जब ये रोटेट करता है इस मैग्नेट के अबाउट, तो ड्यू टू देयर मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी. एंड दिस प्रिंसिपल इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हुई यानी जनरेट हुई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेट्स. सो हाउ दिस जनरेटर वर्क बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन गिवन बाय माइकल फैराडे. नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट. सो इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथ होती है जिसमें कुछ कंपोनेंट्स को यूज किया जाता है फॉर द फ्लोइंग ऑफ चार्जेस. तो it is generally a closed loop or path made by electrical components for the flowing of charges in it.
इलेक्ट्रिक सर्किट वो एक क्लोज लूप या पाथ होती है जिसमें क्या होते हैं, जो चार्जेस होते हैं वो या इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो फ्लो करती है, एंड इट इज मेड अप ऑफ सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक सर्किट के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इसके जो 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहला होता है सोर्स। सोर्स कुड बी अ सेल और अ बैटरी। सेल हमने पढ़ा है, हमने 3 तरीके के सेल पढ़े हैं जिसमें सिंपल सेल, ड्राई सेल और फोटो सेल था। व्हाट इज बैटरी? व्हेन वी कंबाइन मोर देन वन सेल, 2 cells or more than 2 cells, when we combine together to work for the same purpose, that combination is known as battery. Like this is known as a cell क्योंकि ये सिंगल है, लेकिन अगर ये कनेक्शन बना लेगा, अगर ये इस तरीके से कनेक्शन बनाएगा, 2 सेल क्या कर रहे हैं, आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस वन एंड पॉजिटिव टर्मिनल, एंड दिस वन इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमने ड्राई सेल में पढ़ा है कि जो ऊपर का जो कैप होता है दैट रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव टर्मिनल, एंड जो बॉटम होता है वो नेगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है। सो इन केस ऑफ सेल्स वी हैव यूज्ड one only, but in case of battery we have made a combination of 2 cells. ये 2 cells के भी combination हो सकते हैं या more than that. इनका symbolic representation होता है, हम किसी भी सर्किट को शो करने के लिए we use some symbols of this components. तो जो सेल का सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें ये जो बिगर लाइन है that represents positive terminal of a cell and the smaller one showing negative terminal of a cell. If we are going to represent the battery in symbolic manner, so what do we do? Positive terminal, negative terminal. If 2 are here, so positive terminal again, negative terminal. If 3, then what will be doing? Positive terminal and negative terminal, and so on. So what it is representing in battery, that it is starting from positive terminal and ending to the negative terminal. हमने जितने भी कॉम्बिनेशन सेल्स के यहाँ पे किए, लेकिन स्टार्टिंग जो होगी इसके इंडिकेशन की वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ होगी, एंड जो एंडिंग होगी वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ होगी, एंड दे विल बी फॉलोइंग ईच अदर ऑल्टरनेटिवली, positive negative then positive negative then positive negative and so on. So this combination is known as battery, and this is the symbolic representation of battery. Second which we use is conducting wire. Conducting wire. Why do we need this conducting wire? Because if we are using the source, it means it has to flow the charge. And for flowing the charges, it needs a wire that should be of conducting nature. Conducting wire is a kind of wire which has the capacity to conduct the charges or the current from them. So that's why conducting wire. And it is made up of some metals which has the capacity to conduct charges or the current. That could be copper, aluminium, that could be gold and silver too, iron also. But why do we not use generally gold and silver? Because gold and silver kind of metals are very expensive, so we cannot afford such wires. Instead, we generally use the copper wires because copper is also a good conductor of electricity. Instead, all of them, silver is the best one, but as it is very expensive, so we use copper instead of them. Then we can replace copper with aluminium. It is more cheaper, but not as strong as copper. So the first choice for the conducting wire is the copper, as it is more cheaper and it conducts
the current in a proper way, more safer and stronger as compared to this aluminium and iron. Third component is the load. Load generally could be a bulb. We use different devices in our home to run from electricity, so that all can be a load. But generally in an electric circuit, to show the diagram, we use a bulb, and the symbolic representation of bulb is like this. Or it could be like this. The fourth component is very important, that is the switch. Switch again has two types, closed and open. Closed switch represents like that, in which this line joins both the ends of the switch, whereas in open kind of switch, this point of line is not connected with the another end. So these are the four basic components which we need to make an electric circuit. Now we will discuss how we arrange a setup of all these four components. So let's have a look. First is closed electric circuit. And the second is open electric circuit. So first we will consider this closed electric circuit, then we will discuss about open electric circuit. So as you know, to make any of the circuit, first we need a cell or a battery. And this is the symbolic representation of battery. This battery is connected with the conducting wire. One end of wire is connected with the positive terminal of the battery or the source of electricity, and the another end is connected with the negative terminal. And this is the source of electricity, which is a battery. As this is the symbolic representation of battery, you know very well. And we know this is the symbolic representation of bulb. Current always flows from positive to negative direction. So what will be doing? We will show the flowing of current in this circuit by the help of this arrowhead. This is the load or the bulb. And this is conducting wire. Connecting wire. Now the fourth component, which is switch, why do we need that? As you can see in this diagram of electric circuit, if we connect positive and negative terminal and we will use a load over here, so it will start working continuously until the source of electricity is not finished or the load cannot be damaged. But what do we do? As we know that we use electric circuit in our home, so we use electric circuit according to our need. When we need to switch on the light or the fan or any of the device, we switch on that, and if we do not need, we switch off that. For that purpose only, we need to introduce a switch. We need to introduce a switch in this circuit. Now what it will be doing, if our need is to glow the bulb, we will switch on it, and if we do not need to glow the bulb, it means we don't have the use of this bulb, we will be switching off this circuit, so the circuit will stop working. Because if it gets disconnected like this, the flow of charges will come to here, will reach to this point of the switch, but it can't flow after this because it is disconnected.
Again, by the need, we can connect this, we can join this while switching on, and then this charge, this current will start flowing from this end to this end and will go to the negative terminal of the cell, and it will be working continuously, so the load will be working. So this is the purpose to introduce a switch in an electric circuit. As you can see, in closed electric circuit, the path or the loop is closed and the current is flowing throughout the circuit and the load is working. But if we disconnect the path of the electric circuit, it means when we open the path or the loop of that electric circuit, we consider that as open electric circuit. Like now, in this electric circuit, as you can see, this path is broken. This is not complete path or closed path, so the current won't flow after this point of the electric circuit, and hence it is known as open electric circuit. So in any of the open electric circuit, load will not work. This is the first condition for a circuit to behave as an open circuit. Sometimes if the switch is connected, but if the bulb gets damaged, or if the load is damaged, in that condition also the circuit won't work. If the source of electricity will be finished, like battery stopped working, in that condition also this whole circuit will not work, current will not flow, and we will consider this as an open electric circuit. If source of electricity is working properly, load is also in the good condition and switch is on, sometimes wire gets broken. If the wire gets broken, again it will behave as an open electric circuit, because after this end the charges or the current will not flow, it will stop flowing throughout the circuit and the circuit will behave as open electric circuit. So for a circuit to behave as an open electric circuit, there are some conditions. First is, it switches off, switch turned off, second is if wire is broken, third is if source of electricity is finished, and fourth is if wire is broken. So if कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट, कोई भी क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, this four will perform this four conditions, like कोई भी क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में इन चारों में से कोई भी कंडीशन होगा, so the circuit will start behaving like open electric circuit. क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? जिसमें सर्किट एक क्लोज्ड लूप बनाती है, एक क्लोज्ड पाथ बनाती है, and the charges or current flows throughout the circuit, so the load works. But the open circuit is a kind of circuit in which the loop or the path is not closed. It won't allow the charges or the current to flow throughout the circuit, hence the bulb or the load doesn't work. I hope you all are clear about the two types of circuits, electric circuit, closed and open. Now, from all the four main components of an electric circuit, we already have discussed about source of electricity, and we know very well about the switch. That switch is nothing but a device which can connect the 2 points of the path or the circuit. Third is the conducting wire, which is a kind of wire
made up of conductors or the conducting kind of materials. So what are they? In that purpose, we have divided substances into three main categories. सो कंडक्टिंग वायर के पर्पस से हमने सारे सब्सटेंसेस को तीन मेन कैटेगरीज या टाइप्स में डिवाइड किया है. द फर्स्ट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज कंडक्टर्स. These are the substances that allow electric current to pass through them. For example, gold, silver, copper, iron, etc. सो ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं ये करंट को, जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं उनको हेल्प करते हैं टू फ्लो थ्रू देम. लाइक we already have discussed about the type of conducting wire in which we have used the material copper. Why we haven't used this gold and silver? They are also the good conductor of electricity, but they are very expensive, so we do not use this gold and silver. Otherwise the conducting wire will be so expensive that we cannot afford. That's why we generally use copper wire, which is also a good conductor of electricity. Second type of substances is known as semiconductor. So these are the substances that allow some of the electric current to pass through them. Some examples of them are lead and silicon. Nowadays, we are very much familiar with this semiconductors, which has the capacity to take very few amount of electricity. They consume very few amount of electricity. Consumption of electricity is very low in semiconductor devices or semiconducting substances, and they generate electricity according to them. Like हमारे आज के जितने LED TVs होते हैं वो बने होते हैं इस सेमीकंडक्टर सब्सटेंसेस से ही. हम अपने घरों में जो CFL बल्ब्स यूज करते हैं या फिर LED बल्ब्स यूज करते हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ दैट ओनली. नेक्स्ट जो हमारा सब्सटेंस है दैट वी कॉल एज इंसुलेटर. दिस सब्सटेंसेस not allow electric current to flow through them. Some examples are wood, plastic, rubber, etc. तो ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को बिल्कुल भी फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं थ्रू देम. लाइक कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं. हाउ डू वी अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ सब्सटेंसेस? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक सॉकेट. हमने एक इलेक्ट्रिक सॉकेट लिया एंड जिसके होल में हमने इंसर्ट किया सबसे पहले कोई आयरन सब्सटेंस. वी आर इंसर्टिंग दैट आयरन सब्सटेंस इन दैट इलेक्ट्रिक प्लग, सो वी डेफिनेटली विल गेट इलेक्ट्रिक शॉक. या फिर किसी भी कॉपर काइंड ऑफ मटेरियल को अगर हम यूज करते हैं, इंसर्ट करते हैं इनसाइड दैट इलेक्ट्रिक सॉकेट, सो डेफिनेटली विल गेट शॉक.
बट अगर हम किसी वुड स्टिक को लेकर के उसमें इंसर्ट करते हैं या कोई प्लास्टिक काइंड ऑफ सब्सटेंस या फिर रबर के बने हुए किसी भी सब्सटेंस को अगर यूज करेंगे, सो वी डू नॉट गेट इलेक्ट्रिक शॉक। यू माइट हैव सीन जो हमारे स्क्रू ड्राइवर्स एंड टेस्टर्स होते हैं, उनके जो बैग जो हम होल्ड करते हैं व्हाइल यूजिंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाइल प्रिपेयरिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट और समथिंग, तो उसका जो बैग होता है वो रैप्ड होता है विद द प्लास्टिक एंड रबर काइंड ऑफ मटेरियल, वेयर एज जो उसका फ्रंट पार्ट होता है विच वी गेट इंसर्टेड इन दैट सॉकेट, दैट इज मेड अप ऑफ आयरन और स्टील विच इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड क्योंकि वो रैप्ड होता है टू द बैग जहां पे हम उसको होल्ड करते हैं, वी डू नॉट गेट इलेक्ट्रिक शॉक because of this insulating kind of material. So these are the three kind of substances on the basis of conducting current. तीसरा component था हमारे electric circuit का, that is conducting wire. उसके बारे में भी पढ़ा and वो किस तरीके के substance से बना होता है वो भी हमने पढ़ा। जो चौथा हमारा component है electric circuit का, that is a bulb. Let's discuss about that. So as you can see on the board, the diagram is showing a bulb. You might have seen the filament bulb. तो ये दो points देख रहे हो आप, that is known as metal tip. ये जो metal tip होते हैं ये connected होते हैं positive and negative terminal वाले wire से. And why this is made up of metal? क्योंकि metals जो होते हैं generally सारे metals जो conducting nature के होते हैं, इसलिए ये क्या करेंगे, charges को conduct या current को conduct करेंगे. By holding this cable, we do not get electric shock क्योंकि ये अंदर से क्या होता है, wrapped होता है. उसके बाद हमको ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिखता होता है जिसमें दो थिक वायर्स होते हैं. ये दो जो होते हैं ये थिक वायर्स होते हैं and they conduct the electric current to the filament, and this is the part which we known as filament. इस filament की speciality क्या है कि this filament is made up of a different kind of metal which we known as tungsten. यहाँ पे जो metals हमने use किए हैं they are just carrying the current, carrying the charges, but जैसे ही वो current यहाँ इस वाले मेटल में, टंगस्टन मेटल में पहुंचेगी, so this has the unique property that when it gets current it starts glowing. तो ये जहाँ पे जैसे ही इसके पास इस वाले पार्ट यानी फिलामेंट के पास करंट आएगी from this thick wires, so it will start glowing, which is the unique feature of this metal. यहाँ पे जो दो वायर्स हमने यूज किए they are also made up of conducting material, लेकिन यहाँ पे ये ग्लो नहीं करते हैं. Instead they conduct the current, electric current in the bulb. So how this filament bulb works? ये glass disc जो है ये support करेगा इन दोनों thick wire को to give them support. And ये जो होते हैं this is made up of glass. अंदर का जो पार्ट होगा वो वैक्यूम होगा, यानी इसमें कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं होगी. जैसे ही ये फिलामेंट कहीं से भी टूट जाएगा, सो द बल्ब विल स्टॉप वर्किंग, क्योंकि ये बल्ब डैमेज यानी कि फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे में जो करंट का फ्लो हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो यूनिक प्रॉपर्टी थी टू ग्लो, इट विल स्टॉप वर्किंग. अगर ये वाले वायर, however these wires are very thick, तो generally they do not get broken. Instead ये जो फिलामेंट होते हैं कंटिन्यूअस वर्किंग की वजह से जो जब ये ग्लो करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू दैट हीट धीरे धीरे इरोजन होता है जिसकी वजह से ये काफी पतले हो जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट दे गेट ब्रोकन. So this is the whole working principle of bulb. And here we have completed the fourth component of the electric circuit. So I hope the whole electric circuit is now very clear to all of you. The last topic in this chapter is uses of electricity. इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को सर्किट में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब उसके यूजेस क्या क्या है. सो सबसे पहला यूज है, जैसे कि अभी हमने देखा भी है, टू प्रोड्यूस लाइट. सेकेंड है टू प्रोड्यूस हीट.
to run electrical appliances, to produce sound, to produce electromagnet. कुछ uses मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिए. However, we are very much familiar about the uses of electricity because we use electricity in different ways in our daily life. So light produce करने के लिए in different kind of bulbs we use. Heat produce करने के लिए like we use this in heater, like in winter season we use room heaters and all or blowers by which it produces heat. So heat production is also done by the electricity. To run electrical appliances, आजकल हमारे घरों में बहुत सारे electrical appliances होते हैं like TV, refrigerator, washing machine, mixer, electromagnetic induction cooktop and many more devices which runs from the electricity only. To produce sound like loudspeakers, TV, they need electricity to produce sound in them. Last year electromagnet के production के लिए भी in the last chapter magnets we have discussed that how can we make a magnet by the help of electricity, जिसमें हमने एक magnetic substance को electricity provide करके magnet में convert करा था. If you are new and आप magnets वाले chapter को नहीं देख पाए हो, so the link has given in the description box. You can do check out the magnet chapter from the given link. वो link playlist की है, so you can do check out over there. These are the few uses which we do in our day-to-day life by the electricity or electric current. Here we have completed the whole electricity chapter. And I hope that all my students are very clear about the whole concepts of electricity. If you are new to my channel, you can do check out the given link in description box as well as in I button. के और भी concepts हमको clear करना चाहते हो तो आप description में दिए गए link पे click करके मेरे previous videos इस chapter के regarding check कर सकते हो. Along with that, magnet वाला chapter discuss किया था. That link is also given in the description box. You can do check out over there to make your concepts more clear. In the next class we'll meet again with a new chapter. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, helpful लगी हो, so please do like, share and subscribe my video. Have a good bye to all of you. Thank you.